Hello, am I live? Yes, I am. I hope you can hear me. Yes, I am. Loud and clear. Welcome everyone. After a long time, maybe more than a month, बट उससे पहले कुछ वीडियोस अपलोड हुए थे. जो पिछला वीडियो था, अगर आपने देखा है उसका थंबनेल, तो उस पे फीस्ट ऑफ नॉनसेंस लिखा हुआ था. आई एम नॉट रियली श्योर कितने लोगों को पता है एक्चुअली व्हाट द फीस्ट ऑफ नॉनसेंस मीन्स. एंड ये वीडियो में बहुत ज़्यादा ट्रिपल डिजिट में व्यूज़ भी नहीं गए हैं, बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन which initially started with some flat earthers of India, and I took it the very same day to Nathan Oakley's channel. और उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे, 17 मिनट का वीडियो, विच वॉज फ्रॉम नेथन ओकलीज फ्लैट अर्थ डिबेट नंबर 2008, जो कि अभी सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए ही है. आई गेस कि अभी तक नॉन मेंबर्स के लिए वो पब्लिक नहीं हुआ है. इसीलिए आई विल बी प्लेइंग पार्ट्स फ्रॉम दैट वीडियो मोस्टली इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो आई अपलोडेड. लेकिन मेन मुद्दा जो है हमारा, वो कुछ और होने वाला है, और वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ग्रेव मुद्दा है, जिसके बारे में एक टाइम से मुझे बात करनी थी. और बहुत पहले इंडिया के जो फ्लैट अर्थर्स हैं उनके साथ बात हुई भी है बिहाइंड द सीन्स. डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो पे भले ही मैंने नहीं बोला हो इतना ओपनली, लेकिन बिहाइंड द सीन्स हमने बात करी है. रॉबर्ट के साथ मेरी बात हुई है कि ये जो बहुत सारे शिल्स इन द कम्युनिटी हैं जो कि फ्लैट अर्थ को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो इनके साथ कैसे डील करना है. एंड बेसिकली मैं फिर धीरे धीरे छोड़ दिया हूँ नेम कॉलिंग एंड शिल कॉलिंग. बट इट सीम्स लाइक आज का एपिसोड इसीलिए मज़ेदार होने वाला है बिकॉज देयर इज़ गोइंग टू बी सम नेम कॉलिंग. बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी. एंड नॉट जस्ट जिनसे मेरी डायरेक्टली बात होती है, बहुत सारी चीज़ें आई कैन रिलेट सो मच टू नेथन ओकली बिकॉज वहाँ पे भी सेम बातें हो रही है और सेम पॉइंट्स बोले जा रहे हैं. आई फील अ लॉट ऑफ कनेक्ट with the arguments being presented in flat earth debate, which is why ये लाइव स्ट्रीम आज करने का मेन मुद्दा है. सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, वी आर गोइंग देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ नेथन ओकली इन टूडेज लाइव स्ट्रीम. लेकिन मेरे पिछले कुछ अपलोड्स भी प्राइमरीली नेथन ओकली शो में, जब मैं जाता हूँ और बात करता हूँ, कुछ अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है, तो उसी को अपलोड किया है फॉर द पास्ट 2 अपलोड्स ऑफ माइन. एंड दैट्स ऑल्सो द रीज़न कि यहाँ पे अपने चैनल पे वीडियोस बनाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है बिकॉज अराउंड इंडियन टाइम पे अभी विंटर्स में नेथन ओकली का 7:30 PM को स्टार्ट होता है, विच इज़ राइट अराउंड द टाइम दैट आई कम बैक फ्रॉम वर्क, और डायरेक्टली उसके शो में घुस जाता हूँ, जो कि यूजुअली लाइव शो 1 से 1.5 घंटे चलता है और उसके बाद फिर आफ्टर शो चलता है और 1 घंटे. लेकिन उसके बाद चलता है आफ्टर आफ्टर शो, और उसमें हम बहुत बहुत टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं. एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन नेथन शोज, बट डीपर इनटू दोज टॉपिक्स. और बहुत फालतू की बातें भी होती हैं, इंटरेस्टिंग बातें. बट एनीवेज, लिविंग दैट असाइड, वो कॉन्वर्सेशंस में से ही
FED 2008 फ्लैट अर्थ डिबेट एपिसोड नंबर 2008 में मैंने सन वाला पॉइंट रखा था, जो कि मेरा मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन मिस्टर रामाकृष्णन के साथ था, जिसमें कि देयर वाज अ क्लेम बीइंग मेड कि द सन इज़ स्मॉलर देन द अर्थ. I just pointed out कि as a flat earther you are not obligated to make any such claim first of all. उसके बाद you are making claims about relative size without having any clue of absolute size of either of them, actual size. ना ही अर्थ का पता है the ends of it or the size of it, और ना ही सन का पता है the size of it and very closely connected to it because the size is going to depend on the distance to it. तो जब ये सब चीज़ें नहीं पता हैं तो बस कूल बनने के लिए, मीम शेयर करने के लिए एज अ फ्लैट अर्थर हम क्यों कर रहे हैं? हमें फोकस करना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स पे, मुद्दे पे, ताकि कोई फ्लैट अर्थर्स को हल्के में ना ले कि ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स हैं. ये हमारा आज का मुद्दा है. हैव यू गॉबल्ड अप फ्रॉम द फीस्ट ऑफ नॉनसेंस? फीस्ट ऑफ नॉनसेंस मतलब द मर्की वाटर्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज, जिसमें कि सब अजीब अजीब अपने अपने आइडियाज़ लेके आ सकते हैं. वैसे ही आइडियाज़ में से फ्लैट अर्थ भी एक आइडिया है. तो मैनी थिंग्स फॉल इन द सेम बकेट कि फ्लैट अर्थर हो तो ऑटोमेटिकली टार्टेरियन भी हो गए और ईथर बिलीवर भी हो गए और डायनासोर डिनायर भी हो गए और मड फ्लड बिलीवर भी हो गए, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो एक टाइम था जब मैं भी ये सब चीज़ों पे पड़ा हुआ था. अल्टीमेटली फिर आई स्टार्टेड टू गेट क्लैरिटी, और पिछले कुछ सालों से जब से नेथन ओकली के शोज़ में रेगुलर मेंबर होना स्टार्ट किया है, रेगुलरली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है अभी पिछले एक साल से, एंड ऑल्सो अपने लाइव स्ट्रीम्स में पिछले एक साल से, आई हैव बीन ट्राइंग टू फोकस ऑन फ्लैट अर्थ because that's the reason you see the name flat earther here. मेरे आई हैव सेड दिस बिफोर, लेकिन फिर भी रिपीट करना बनता है. मेरे कुछ कुछ अच्छे दोस्त, बहुत सारे फ्लैट अर्थर्स आपको बोलेंगे कि हमने दोस्त खोए हैं फ्लैट अर्थ की वजह से, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट. लेकिन फिर भी कितने दोस्त बनाए हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कितने खोए हैं, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू इन माई केस. ऐसा नहीं है कि जस्ट फ्लैट अर्थ के वजह से मेरे जिगड़ी यार मेरे से अलग हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है. उसी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा एक अच्छा दोस्त पांडे जिसके कि यूट्यूब वीडियो पे स्टैंड अप कॉमेडी के 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं. एनीवेज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई डाइग्रेस. सो पांडे को एक टाइम पे एलियंस के बारे में बताते थे और भी बहुत सारी बातें करी थी. और उसके बाद जब उसको बोलते हैं आज से 5-6 साल पहले फ्लैट अर्थ जानने के बाद कि पांडे अर्थ इज़ फ्लैट, तो इट वाज लाइक कि तुम इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें बोले थे, तुम्हारा चेंज होता रहता है, तुम तो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हो, तो अभी एक और चीज़ बोल रहे हो अर्थ इज़ फ्लैट, तो इस पे मान कैसे ले हम? तो पांडे को प्रूव करने का मेरा उस टाइम का 6 साल पहले का मेरे आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि यहाँ पे जो आप ये टी शर्ट देख रहे हो, इससे पहले एक दूसरा डिज़ाइन बनाया था ये सब. नहीं, यही वाला फर्स्ट टी शर्ट था मेरा, जो खुद से प्रिंट करवाया था मैंने ऑर्डर करके और अपने दोस्तों में बांटा था. ट्रूथ इज़ ट्रूथ, द अर्थ इज़ फ्लैट. जो सच है भाई वो सच है. तो पांडे को उस टाइम पे मैं बोलता था कि पांडे एलियंस और ये सब जो भी तुमको अनुनाकी और एनकी एनलिल बताए थे, टी शर्ट प्रिंट करा के तो नहीं घूम रहे थे ना. एंड ऑल्सो अनदर थिंग, ट्विटर पे अपना फ्लैट आर्थर नाम से अकाउंट बना के तो नहीं घूम रहे थे ना. नॉट दिस वन.
माई अकाउंट इज दिस फ्लैट आर्थर, ये ओपन था फॉर सम रीज़न, इस पे हम आएंगे. द फ्लैट अर्थर थर. तो वेयर वर वी. चलो इसको सबसे पहले बंद करते हैं. कोई भी नहीं सुन रहा है. अभी 4-5 लोग थे बट नो वन एल्स इज़ हियर नाउ. ठीक है. इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यही मेरा होल पॉइंट है कि ये बात इंटरेस्टिंग नहीं है. लोगों को सुनना है फीस्ट ऑफ नॉनसेंस. फ्लैट अर्थर्स को जानना है explanations and speculations and wild theories from the feast of nonsense. They are not interested in the knowledge, in the measurement, in the proofs of flat earth. उनको ग्लोब से मतलब है. ग्लोब को डिनाई करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन प्रूविंग दैट द अर्थ इज़ फ्लैट. तो मेरा भी जर्नी एक टाइम पे, चलो अपने चैनल पे ही सब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कि वीडियोस में जाओगे. आई हैव डन अ फ्यू थिंग्स वीडियोस पे. 2-3 साल पहले फ्लैट अर्थ चर्चा नंबर 10 में आई प्रेजेंट द टॉप 3 ग्लोब किलर्स. तो इस वीडियो में अगर लेट्स जंप इन, मैं प्रेफेस ही कर देता हूँ इसमें शुरू में कि देखो भाई, आई एम नॉट गोइंग टू बी मेकिंग पॉजिटिव क्लेम्स, राइट. उस टाइम पे ऑलरेडी मैं नेथन ओकली और क्वांटम इरेजर इनके वीडियोस और इनके चैनल पे जाना स्टार्ट कर दिया था. और जो प्रूफ्स हैं वो भी ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट, ये सब कुछ globeterminator.com क्वांटम इरेजर के वेबसाइट से ही है. कि we are living on a magical globe which is hurtling through the infinite vacuum of space that was created billions of years ago, and we are basically evolved. Philosophy is ideal topic of debate अर्थ प्रूव करने का तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो अप्रोच ले रहा हूँ दैट इज कि आई एम नॉट मेकिंग एनी पॉजिटिव क्लेम्स. अगर कोई भी डिबेट वगैरह में बेसिक आइडिया होगा तो पॉजिटिव क्लेम और नेगेटिव क्लेम जो टॉपिक ऑफ डिबेट है. सो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ. बट दिस इज़ लाइक 2.5 years अगो, June 13, 2021, कोरोना के बाद का टाइम है. तो उस टाइम पे डिस्कॉर्ड पे इंटरेस्टिंग लगता था बातें करना अलग अलग लोगों से, और एक साथ ग्रुप में लोगों को बताने का मौका मिलता था कि अर्थ इज़ फ्लैट. बट ठीक है, वो टाइम चला गया. दोज डेज आर बिहाइंड मी. अभी इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. 2024 आ रहा है, राइट. तो नाउ देयर इज़ नीड कि हम मुद्दे पे आए. किसी की भी फ्लैट अर्थ जर्नी स्टार्ट होती है इंटरनेट पे. अगर हम बात करें तो आई हैव बीन अ फ्लैट अर्थर सिंस 2017, नवंबर ऑफ 2017. और उससे पहले इंटरनेट पे चीज़ें तूल पकड़ी थी राइट अराउंड 2014, जिस टाइम पे कि मार्क सार्जेंट, एरिक दूबे, इन लोगों से पहले भी एक मैथ पावरलैंड द स्टैंड अप कॉमेडियन, वो बहुत पहले से बात करते आ रहा था. बट प्राइमरीली अगर बात करें तो 2014 में मेजर चैनल्स एंड वीडियोस इंटरनेट पे वायरल जाने लगे ऑफ मार्क सार्जेंट्स फ्लैट अर्थ क्लूज एंड एरिक डूबेज 200 प्रूफ्स दैट द अर्थ इज़ फ्लैट. उसके पहले भी बहुत सारे विलियम कारपेंटर के बुक्स और बेडफोर्ड सी लेवल एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ वॉज ऑलरेडी देयर. बट मेरी जर्नी में भी एज यूजुअल पीपल लाइक डेविड वॉइस, जेरन, ग्लोब बस्टर्स का बॉब नोडेल, विटसेट, ये सब कोई भी आए थे. बट ऑल ऑफ देम विद देयर ओन peculiarities, right. Mark Sargent takes a very secular view on it.
कि हाँ भाई हम क्लूज़ डिस्कवर कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। उसके वीडियो से एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम पे भी, बट बहुत सारे इवेंट्स एंड एसोसिएशन से उसके द वे ही पोर्ट्रेज द टॉपिक ऑफ फ्लैट अर्थ, उससे पहले से ही दिक्कत है। एरिक दुबे with all his spiritual science and Jesus does not exist, Jesus never existed, and पता नहीं दुनिया भर के कॉन्स्पिरेसी थियरीज लाके अपने चैनल पे फ्लैट अर्थ के साथ मिक्स कर दिया। जेरन हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट नासा फेकिंग स्टफ, घंटों बिताए हैं उसने, बट एट द सेम टाइम ही बिलीव्स दैट साइंस डज नॉट प्रूव एनीथिंग, और इसके लिए वो एक दूसरे फ्लैट अर्थर को, नेथन ओकली को, स्कैमर भी बोल सकता है। Whitsitt gets it with his incoherent dielectric acceleration, just carrying forward the legacy that Bob Nadell, rest in peace Bob, left. तो इन सारे फ्लैट अर्थर्स को मैं यहाँ पे unequivocally denounce कर रहा हूँ, because they do not listen to the flat earthers who actually make sense and who actually want flat earth to reach somewhere, कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं with crisp arguments and sharp points, sharp arguments, ऐसा ही पुट करते हैं कि नेथन ओकली एंड क्वांटम इरेजर, कि वी आर शार्पनिंग आवर weapons in order to fight with the globe side, and we are aiming at the mainstream supporters, not people like Simon Dan या प्रोफेसर डेव, जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोला है जस्ट ट्रैक्शन के लिए कि चलो ये टॉपिक अभी चल रहा है तो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम आएंगे। Logical Insight, this is live. MH370 flight, see? Feast of Nonsense. Right off the back. जो बताया ना कि यही सब इंटरेस्ट है लोगों को। 9/11 में इनसाइड जॉब था, MH370 का क्या हुआ, एंटार्क्टिका के पार क्या है, डोम किस चीज़ का बना हुआ है, कितने लेयर्स हैं ब्रह्मांड में। It goes on and on and on. सबसे पहले नेथन ओकली का मुद्दे पे बात, वो भी यहाँ पे डेविड वाइस को ही डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई 50 जगह पे जाके इंटरव्यू दे के आते हो, अपना वही सेम रिकॉर्ड रिपीट करते रहते हो, सेम रिकॉर्ड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन दम क्यों नहीं है बात में? इतना ज़्यादा बोलते हो, थोड़ा कंटेंट भी तो होना चाहिए ना, और अगर कंटेंट रखो तो इतना ज़्यादा बोलने की में भी ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा बोल के यू आर लीडिंग टू मोर एंड मोर कन्फ्यूजन, एंड मे बी, जस्ट मे बी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स. That's his audience. People who are on the fence, who aren't able to make up their mind, who are, even after calling themselves a flat earther, are open to the idea that it can be a globe also. There is a possibility. Right? ये सुनते हैं पहले, आज का ही अपलोड है फ्रॉम हिज वीडियो, प्रीवियस वीडियो 2014, जिसमें से भी मैं कोई पार्ट्स प्ले करने वाला था, बट नाउ नेथन ओकली हिमसेल्फ हैज़ एडिटेड अ वीडियो, एक 2 मिनट का है जो कि अभी हम प्ले करेंगे, और ये जो 17 मिनट का है टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइव स्ट्रीम प्ले करेंगे. 17 मिनट वाला इज़ फॉर मेम्बर्स ओनली. आई एम स्टिल गोइंग टू प्ले इट, मे बी नॉट ऑल द वे थ्रू, बट पार्ट्स ऑफ इट. First thing out of your lips, if you're going to tell someone you're flat earther, tell them how it's measured flat. Someone brings up the horizon because they're a globe believer who thinks it's curving, tell them how it's practically applied. To establish Earth as flat, it's flat.
That's how it's functionally operating. And if they understand that, be it through the development of maps or the use of maps if it's celestial navigation that you're talking about, surveying as Dave used, but with a focus on it to the point where the audience member knows at the end of that discussion, this is how Earth is functionally flat. Almost the same height as the balloon, but then we have a picture from NASA and we get this. Yeah, wow. This is stupid. Stupid? What about telling him the practical application of a horizon that establishes a horizontal plane? Rather than just saying NASA's pictures are stupid. Is this the standard? I feel ashamed. Without a official lens, and when you're up high, you can't even see. The Earth is all whited out. I mean, go back. It's kind of, the colors are muted. Who gives a crap? So the horizon has a practical application though, doesn't it? In both building, surveying, and celestial navigation, you can reference a horizontal plane by use of the horizon. That's its useful practical application in the real world. You establish horizontal with it. Clue is in the name. Establishing a horizontal plane of reference is establishing Earth as flat. They don't ridicule you. It's not the reaction that we get on the internet from faceless, nameless trolls who want to make their numbers seem larger by having 25 sock accounts and sharing their pain continually, making it their dedicated job to fight the flat Earth as a woman beater, projecting their aggression onto us. That's what we have to deal with. No, we don't. No. You don't have to deal with anti-flat earthers as a primary concern when you get here. And as me, a videographer and flat earther who's disseminating this information to an audience, I want to disseminate to them that Earth's flat. That's the bit that's important, isn't it? And that's exactly my point also. पिछले 1 साल से अपने लाइव स्ट्रीम्स में अगर आप देखो तो I have also been trying to drive home this same point. Much of the discussion is regarding the use of the word science by flat earthers. और जो नया काम किया है मैं बता रहा था प्लेलिस्ट्स में if you want to hear from me my own set of feast of nonsense, see, this channel has no playlists. How's that possible? इंटरनेट इश्यूज पिछले कुछ टाइम से बहुत आ रहा है. सो हैं FEPC फ्लैट अर्थ पे चर्चा. ये बेसिकली फ्लैट अर्थ एंड बियॉन्ड है, जिसमें कि हम बियॉन्ड पे ज़्यादा बात करते हैं बिकॉज सबको पता है कि अर्थ फ्लैट ही है. देर आर मैनी डिबेट्स ऑल्सो विथ पीपल ऑन डिस्कॉर्ड. सो ये अप्रॉक्सीमेटली घंटों के होंगे, एक एक वीडियो 1.5-2-3 घंटे का भी है. एंड ऐसे 27 वीडियोज़ हैं पिछले 4 साल से. देन देर आर फ्लैट अर्थ इंटरव्यूज़. प्राइमरीली इंडिया में फ्लैट अर्थर्स जो मुझे मिले हैं जिनका यूट्यूब पे भी प्रेजेंस है, उनको मैंने कोशिश की है इंटरव्यू करने का. बट यहीं पे रामाकृष्णन हैं जिनके बारे में मैं अभी सन रिगार्डिंग बात कर रहा था. एंड एज़ फार एज चाणक्य तिवारी इज़ कंसर्न तो उनके बारे में भी मैंने बात की है अपने मेन ये साइंस एजुकेशन वाले वीडियो में. और मेरे 2 मेन साइंस के ऊपर लंबरजैक वर्सेस नमटी फ्लैट अर्थर्स वाले वीडियोस, साइंस 101 पार्ट 1 एंड साइंस 101 पार्ट 2. तो ये दोनों पार्ट्स ग्रेविटी के पॉइंट को स्पेसिफिकली एड्रेस करते हुए साइंस के ऊपर बनाया था. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव बीन फोकसिंग अपॉन फॉर द पास्ट 1 ईयर. और नेथन ओकली ने आज के एपिसोड में डिक्लेयर कर दिया कि भाई 2024 is going to be about how Earth is measured flat. #measured flat earth. उसके सारे पिछले कुछ वीडियोस देखो. Earth is proven flat. Earth is measured flat. Let's prove Earth is flat. सारे वीडियोस में I just can't miss
नेथन्स शोज दीज डेज, जिस वजह से अपने चैनल पे वीडियो नहीं हो रहा है लेकिन इतने इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस और इतने रेलेवेंट कॉन्वर्सेशंस विच आर इवन मेकिंग मी take a stand on many of the things which I used to present at some point in time. और वो सारा कुछ जो नेथन से मैंने डायरेक्टली ही बात किया था, आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ कॉन्वर्सेशन नेथन के चैनल पे ही हुआ है, विच इज़ वाई आई एम डूइंग दिस लाइव शो. कि नेथन के आई एम अ मेंबर, सब्सक्राइब टू नेथन ओकली एंड बिकम अ मेंबर, सपोर्ट हिम. ही इज़ एक्चुअली अ यूट्यूबर और मेरा कमी यही है कि भाई आई हैव अ जॉब और यूट्यूब में करता हूँ अपने, पता नहीं क्यों रियली तो लेट्स जंप इन आज के मुद्दे पे, ताकि आपको इधर उधर वीडियो पे भटकाता ना फिरूँ. आई हैव मेड सम टाइम स्टैम्प्स ऑल्सो, तो हम डायरेक्टली टाइम स्टैम्प्स पे बात करेंगे. और लेट्स बिगिन. ऐड ना आ जाए बस. नहीं आया तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 1 hour 28 minute मार्क. Activates the kryptonite to affect human cells, so I understand, Darwin. It's terrible. Fear porn, fear porn. Yeah, it's really the current thing now. They're really hyping it up. So that means that, of course, the sun has to be a giant exploding ball of gas. Don't be afraid. Okay, so I will go back to Nathan's point, and so I also agree, and in my response, I also said something of the same sort, in which I gave him two exhibits. Exhibit A being, when a glober says that the sun is 93 million miles away, a flat earther asks, prove it. The glober gives some baseless assertion, and the flat earther points it out. This is the first exhibit. The second exhibit is, the glober says the sun is 93 million miles away. The flat earther says, no, it is not. The sun is small and local. The glober says, prove it. And the flat earther says something like the spotlight effect or the hotspot effect, whatever the hell that is supposed to mean. So it's a matter of choice, of priority, which way you want to go. But the second exhibit unnecessarily reverses the burden of proof on flat earthers. Well, You missed a step. Arthur, Oh, no. I mean- You missed a step. So there's some No. third steps to that. So what the baller then does, so in your example, that was absolutely perfect, by the way, Arthur. Perfect. Right. सो ये बस आपको अपडेट देने के लिए था कि जो पिछला वीडियो मेरा अपलोडेड है फीस्ट ऑफ नॉनसेंस, उसमें हम लोग यही सन के डिस्टेंस रिलेटेड बात करते हैं एंड जस्ट दे लाफ इट ऑफ. दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट कि ये क्या बात कर रहे हो, कैसा लॉजिकली फलेशियस आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हो कि वो स्पॉटलाइट से ऐसा होता है तो ऐसा दिख रहा है मतलब सन स्पॉटलाइट है. तो एनीवेज ये वीडियो में आपको दिख जाएगा वही सेम बात. यहाँ पे हम टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट आई प्लेड दैट पार्ट, लेकिन 128 के अलावा आगे बढ़ते हैं. So flat earther says hotspot when we've got the full dichotomy set up, which wasn't necessary. Perfect example. Then the glober says, I can use a flat plane measurement to prove Earth's a sphere in this false dichotomy. And because I'm better at utilizing a flat plane for an angle to the sun to claim its height in orbital motion around a sphere that was derived from a flat plane, I sound far more intelligent when I use a flat plane to prove a sphere. Therefore, Earth's a sphere. Were you listening in, John, when I gave you loads of props in Ballbusters? I might have missed that part. I gave you plenty of props in Ballbusters because there was various different points where it got to the stage where this exact scenario happens.
But typically, you give a fair example where you're like, no, the flat Earth is competent and will offer up a plane measurement, in this case, for height to the sun. Now, that would be a failed example as well because it's going to move throughout the day, changing its angle. Nevertheless, they're giving a flat plane measurement that fails, and the globe earther gives the exact same example off a flat plane but says it proves a globe. So you end up in a false dichotomy with two claimants, one making a claim that's going to fail, that uses a flat plane but fails for whatever reason. In this case, a failed claim because there are hotspots. Okay, we're talking about the height of the sun. You say it's local, you say hotspots is your proof. What say you, Glober? He says, I can measure a flat plane. He listened to all this clever maths, and that proves a sphere. Right, John? Yeah, that's basically what they've been doing from the beginning with Right. everything. Just about. Oh, As an alternative to the hotspots, a flat earther could just say, yeah, but Aristophanes. And I'm now just going to presuppose a disk instead of a ball. And then the angles to the sun proves it's supposedly 3,000 miles away. I mean, they could just pull a literal Aristophanes to counter the ball version of Aristophanes, and it would reach the same goal. I mean, neither of it would prove an actual location of the sun. But both would require a flat plane to use the methodology. Aristophanes. That is true, yes. Right, but that's John's point. So when they say we've got a flat Earth proof and the other opponent says I've got a globe proof, what will actually happen is there'll be two flat Earth proofs stacked up against one another, or in this case, one flat Earth proof being used by a glober to measure angles off a plane to infer orbital motion. The other will be a hotspot over a cloud to infer that it's small and local. Arthur's predominant point is that ain't necessary. They've claimed they've got a height to the sun 93 million miles. You, as Joe Normie Flat Earther, haven't got any necessity to claim anything. Now, if you want to take their claim and prove that they used a flat Earth for their claim, that would be the right thing to do, because you don't have to defend anything. Why would you? Why do you want to claim you got a height? Why do you care? जो नॉर्मी फ्लैट अर्थर, यही दिक्कत है. When you Google the spotlight effect, चलो अभी करके देखते हैं. The spotlight effect is the psychological phenomenon by which people tend to believe they are being noticed more than they really are. That's the case with many flat earthers. With all these surveys that show that 60% of Brazilians are now believe that the earth may be flat. और ये सब डेटा शेयर करके खुश होते हैं कि आई एम श्योर देयर वुड बी मिलियंस ऑफ फ्लैट अर्थर्स बाय टुडे. You know what the problem is? There are millions of flat earth believers. They don't know that the earth is flat. They just believe that the earth is flat. वही बात हो गई. Out of the boiling water, straight into the fire. एक बिलीफ सिस्टम से निकले हीलियोसेंट्रिज्म से और दूसरे बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया. पता नहीं है एक्चुअली कि अर्थ फ्लैट है, बट हाँ कॉन्स्पिरेसीज वगैरह मेक सेंस. बहुत सारे झूठ बात बोले गए हैं तो फ्लैट अर्थ के बारे में भी झूठ ही बोला होगा. एटलीस्ट वो जो अपने तरफ से प्रूफ देते हैं उसमें तो कोई दम नहीं है. एंड फिर जेरन के जैसा और बहुत सारे दूसरे फ्लैट अर्थर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो अपना चैनल चला रहे हैं सालों से बस यही पॉइंट आउट करके, उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं और नासा के वीडियोस और इसरो के वीडियोस देखते रहते हैं. एंड द सेम अप्लाइज टू द व्हाट्सएप ग्रुप आई एम एसोसिएटेड इन, where there are supposedly Indian flat earthers. Again, most of them believers. And all that gets shared over there, feast of nonsense. Nothing about flat earth. Flat earth arguments
जब शार्पन करने की बात आए देन दे सीम टू मिस द पॉइंट. I may be going somewhere, but I forgot. About the height of the sun because of the hot spot. Does it make any difference to your life? No. The only reason you're doing it is because the Feast of Nonsense has pre-fed you a meal that made you feel it necessary to regurgitate up that crap in false dichotomy. You don't have to claim what height the sun is. Even if you did know, does it I hope you get it. समझ में आ रहा हो आपको. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेथन ओकली का एक्सेंट और इतना फास्ट बोलता है कि नहीं समझ में आता है, तो अच्छा है कि आप ट्रांसलेट कर देते हो. बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट हियर टू ट्रांसलेट नेथन ओकली. आई एम जस्ट हियर मेकिंग द सेम पॉइंट्स, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें, इतना कुछ है कि आई जस्ट कैन नॉट pour it all down here on my channel. सारी बातें जो वहाँ पे होती है, एक एक मिनट is invaluable. I try to be a part of it, and at least for the past few weeks and months also, it's been a great success. हो रहा है. उसके चैनल पे घंटों बातें होती है और बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है. And I love the direction in which Nathan is taking this whole thing and his plans and vision for 2024. मैं फुल सपोर्ट में हूँ उसके लिए. भले ही मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद करता था, अभी दिखाया आपको अपने चैनल पे कि भाई ग्लोब डिनायल से ही स्टार्ट करता था. बट ठीक है ना, उस टाइम पे मेरे पास वेपन, इवन शार्पर वेपन नहीं था. आज के डेट में मेरे पास अगर फ्लैट अर्थ का प्रूफ है डायरेक्टली, celestial navigation, and I can argue that earth is measured flat. Elevation angles are measurements which are only possible on a flat earth. तो फिर इससे ज़्यादा potent flat earth argument और क्या हो सकता है? And we should be focusing on these points, if at all trying to understand the intricacies of these points. बहुत ज़्यादा है नहीं, सिंपल है. इसीलिए तो पोटेंट है, कारीगर हैं, काम करते हैं. तो थोड़ा और सुनते ही हैं. it help you prove Earth's flat? Well, with the angle measurement they'll be using, yeah, it does. Focus on that. What it does is a little bit of counter programming against, like, no, it has to be 93 million miles away, and that's it. It's like a reflex counter programming, but it's technically not proven. The only way it's proven is that, oh, I'm proving a globe based off measuring a flat plane. Well, I'm proving a flat plane measured off a flat plane. I mean, based on a that's hotspot. really the thing. Well, with Arthur's example, it's just based on it having a hotspot. Yeah, but the hotspot is just an illusion, really. I mean, you don't even know what you're looking at there. Yeah, but there's a certain nuance you're missing. Yeah, but there's a certain nuance you're missing. The globe believes the sun is X size and 93 million miles away, but the flat earther believes the sun is X size and 3,000 miles away. Could they have a belief? This is what they're doing, arguing my belief versus your belief. David Woods, right? David, hang on. Brian, amazing guy. उसका भी अपना चैनल है, वीडियोस बनाता है, आयरिश एक्सेंट है, which may make it difficult for many Indians to understand what he says. मुझे as such कोई दिक्कत नहीं आती है. बहुत कॉन्वर्सेशंस भी होते हैं ब्रायन के साथ. बहुत बारी वो रिपीट करता है इस चीज़ को कि फ्लैट अर्थ बिलीवर्स हैं अधिकतर से अधिकतर. ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लैट अर्थर अपने आप को बोलते हैं वो एक्चुअली दे आर नॉट नोअर्स ऑफ फ्लैट अर्थ. They don't know actually that the earth is flat. It is measured flat, observably and measurably and provably flat. वो बस believe करते हैं, right? तो that's Brian. उसने अभी यही बात बोली, ये बार बार रिपीट होता है. और ये जो पार्ट मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, इट इज़ पार्ट ऑफ हिज लाइव स्ट्रीम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है.
जो नॉन लाइव स्ट्रीम वाला पार्ट है, मेंबर्स ओनली पार्ट है, वो वाला पार्ट मैं बीच बीच में थोड़ा क्लिप्स ही प्ले करूँगा. If a different Let me finish. Owen. Let me finish. David Weiss can claim that he is a flat earth map and show someone the Gleason's projection. And a border can say, Australia is too big. And David Weiss can say, you're just not open-minded enough. Go on, Owen. Yeah, no, it was a good point. I mean, it's just a matter of presupposition. I figured this out in, what was it, 2008, with the 3 million miles. It was the claim. You as a flat earther, rather than with overcomes for globe claims that making in the affirmative, to give you an argument for the flat earth that may or may not fail or win, it doesn't matter. As long as you've got an argument to put forward against the positive claim, you're not debunking the positive claim. That's what the Feast of Nonsense is laid out to give everyone from the off. Now, the people who are more popular in this arena are the people who gobble it up and regurgitate it, because they're acceptable in the algorithm, because it serves the ends of the people who want to control the opposition. Give them an argument to put up against our argument. Hopefully it'll fail. And then, even if it doesn't, there's a good chance that the way we've set up the anti-flat earth side of this argument, they're going to be begging the question of the globe and repositioning every argument to beg the question of the globe in every instance. Now, when that happens, you just have somebody who's insistent on begging the question of a globe arguing against someone with a crap argument for a flat earth, and both will utilise the flat plane to measure their examples, but neither will realise. So sun wala argument, basically in Nathan Oakley's opinion, is a crap argument. Both are left with a belief, flat earther and globe earther, one being the more dominant in society, globe earther, who can insist that he righteously can beg the question, the other with a fairly crap example of a hot spot for the sun proving that it's local. Well, who cares if it's local? Debunk their claim and show how they measured a flat earth. That's it, that's what should happen. But if you regurgitate the Feast of Nonsense, like Dave Weiss in the recent example, then your average Joe Normie sees all of the pre-sharpened tools for a globe earther to chop that man's head off. That's Dave Weiss. He's going to go, wow, look at all these shiny tools I could chop his head off with. And then you're going to chop your head off with them. You don't even know it's being removed while you tell them that they need to wake up and smell the coffee of reality, and you're just not open-minded enough when they don't accept your crap arguments that you've been given by the Feast of Nonsense. That's why they're designed to fail or be hand-waved. Any last comments? And that's why I think they're the primary enemy. The Feast of Nonsense seems to be our true enemy. Yeah. इसी पॉइंट पे अपना अपलोडेड वीडियो एंड होता है एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर. सेम वीडियो में आगे और भी बहुत सारी बातें होती हैं. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कैमरा दिखाना. कंस्पिरेटार्ड ये वर्ड बोलने में हर बारी अटकता हूँ. यहाँ पे नेथन के इस वाले पार्ट ऑफ द वीडियो में 150 या तो मेन मुद्दा आज का फिर से बीच के टाइम पे रिपीट करने का हो गया है समय कि ज़रूरत क्या है फ्लैट अर्थ को अलग करने की बाकी के सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज से. फ्लैट अर्थ इज़ नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थियरी. It is about the nature of the reality we live in. It is objective. And the earth is
measurably, provably, observably, and obviously flat. अगर आपको फ्लैट अर्थ टर्म से कोई दिक्कत है, पहले भी मैंने वीडियो में बोला है, हट जाओ इस एरिना से, बिकॉज यू डोंट नो दैट द अर्थ इज एक्चुअली फ्लैट. व्हाट काइंड ऑफ अ फ्लैट अर्थर आर यू, जो कि यही नहीं बिलीव करता है कि अर्थ इज एक्चुअली फ्लैट. देर आर हिल्स एंड वैलीज ना. वी कैन नॉट रियली से दैट द अर्थ इज फ्लैट. You don't understand the argument of flat earth. You just like the label of flat earth. पिछले 1 साल के बहुत सारे वीडियोस में I have called it out. Flat earthers of India. Sorry, not sorry. I can't help. And that's the best thing I can do. It is not because Nathan Oakley is doing that same thing over there, but बहुत पहले से ये जो thought process है, why did I get why did I gravitate towards the arguments of FED and ballbusters. आज से 3-4 साल पहले there was a time जब ग्लोबस्टर्स भी सुनता था. वहाँ पे जो मॉर्गन, द मॉर्गाइल, बॉब नोडेल, जेरन, ईरू लैंडुची, विटसिट गेटसिट, स्टीव, कितने अलग अलग फ्लैट अर्थर्स अपने वाइल्ड थियरीज और साथ में 50 और चीज़ें लाके विद द बैगेज ऑफ टाटेरिया, मड फ्लड, फॉल्स हिस्ट्री, वैक्सीन्स, सब कुछ लेके आ गए. और साथ में एक और बैग में क्या है, फ्लैट अर्थ. नहीं, मेरे लिए थोड़ी चीज़ें अलग हैं. फ्लैट आर्थर जो एकदम इनिशियली बता रहा था कि उसके बाद ही इवन यूट्यूब चैनल बनाना, ट्विटर पे जाके फॉलोअर्स गैदर करना, ऑल्दो प्राइमरीली ट्विटर पे जो फॉलोअर्स गैदर किए हैं वो फीस्ट ऑफ नॉनसेंस फैला के ही किए हैं. स्टिल नाउ इज़ द टाइम फॉर रेक्टिफिकेशन. और इनएक्टिव भी हो गया बहुत हद तक ट्विटर पे. दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू, 1-on-1 बातें. और टेक्स्ट से जितना हो सके आई अवॉइड टेक्स्ट. तो यूट्यूब इज़ द थिंग आई एम इंटरेस्टेड इन. जिनके पास भी ऐसे ग्लोब अर्थर्स हों जिनसे डील करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे पास ला सकते हो. लेट्स सी हाउ आई एम एबल टू डील विथ देयर आर्ग्यूमेंट्स. बट फ्लैट अर्थ और फीस्ट ऑफ नॉनसेंस आप यहाँ पे मेरे चैनल पे ला रहे हो, प्रेजेंटिंग इट एज न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू रिसर्च इनटू सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फ्लैट अर्थ, तो उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है, क्या स्टैंडर्ड, क्या लेवल्स और किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को एक्चुअली वैल्यूएबल माना जाता है, उसके लिए आपको मे बी आप यहाँ पे मेरे सामने प्रेजेंट करने को तभी आओगे जब आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो और एटलीस्ट मेरे लाइव स्ट्रीम्स पिछले 1 साल के देखे हों. और लाइव स्ट्रीम्स में जैसा जैसा मैं बात करता हूँ कि साइंस वाला वीडियो और ये सब कुछ, आई ऑल्सो शोड यू राइट नाउ कि प्लेलिस्ट में जाके साइंस एजुकेशन का जो अलग से बना दिया है, वो सारे वीडियोस एटलीस्ट आपने देखे हों एंड यू गेट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. ये वाले में साइंस एजुकेशन, दिस इज़ द शिफ्ट विच आई एम ट्राइंग टू शो कि आज से 3-4 साल पहले सब कुछ ही बातें फ्लैट अर्थ पे चर्चा में हम लोग दुनिया भर की स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, रीइंकार्नेशन, कर्मा, ये सब कुछ बात करते हैं. फ्लैट अर्थ इंटरव्यूज़ लिए थे. कमल मोंगा जी के साथ जो वीडियो है उसमें माई ओनली वीडियो विथ मोर देन 1000 व्यूज़. तो दीज आर गुड मेमोरीज. बट राइट अराउंड दैट टाइम आपको ये भी दिखेगा, नहीं, क्वांटम इरेजर और नेथन ओकली का असर,
कि साइंस के बारे में बात करना और साइंस के पॉइंट को आगे रखना, राइट। ये सब कॉन्वर्सेशंस तो और भी कई साल पहले से चल रहे हैं, बट अल्टीमेटली अपने चैनल पे कि नहीं, वी हैव टू stick to some foundations. We have to choose our words carefully in order to not sound like morons, which is the paintbrush that all flat earthers are painted with. Conspiracy nuts. तो ये इमेज अलग करना है। तो these conversations and the truth will make you free. I do not regret, क्योंकि यहाँ पे आई एम मॉडरेटिंग एंड दो ऐसे लोग जो बाइबल के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, समथिंग दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन, तो इसीलिए कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। बट इसके बाद धीरे 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 फ्लैट अर्थ पे चर्चा ख़त्म होता है, जहाँ पे एरिक दुबे के बहुत सारे पॉइंट्स जो आज मैंने बोले, 2 साल पहले 2.5 साल पहले के एडम मीकिन के साथ वीडियोस में भी वो सारी बातें हैं। एंड वी डिस्कस देयर ऑल्सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्लैट अर्थ, पन इंटेंडेड। चाणक्य तिवारी के साथ वीडियो, उसके बाद शामल दोलाई को कवर करते हुए दीज टू वर काइंड ऑफ द मेन टर्निंग पॉइंट्स अराउंड 8 months ago, जहाँ पे मेरा फिक्स हो गया कि भाई ये करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ टू एड्रेस फ्लैट अर्थर्स रादर देन ग्लोब अर्थर्स, क्योंकि ये फ्लैट अर्थर्स बहुत सारे जगह पे फ्लैट अर्थर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दी सो कॉल्ड फ्लैट अर्थर्स, नम्टी वंस। तो वही, इसीलिए इस चीज़ को डील करना ज़रूरी है। एज फार एज दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज़ कंसर्न्ड, I think I'm going to part ways with that group simply because I'm not interested in the Feast of Nonsense, और वहाँ पे यही चलता है। चलो, a good time to show कि और क्या चलता है Feast of Nonsense के बारे में आपको आइडिया चल गया होगा। तो just to give you a glimpse, ट्विटर पे जाते हैं। इसके पास अभी 240K फॉलोअर्स हैं, ऑलमोस्ट 2.5 लाख। आई थिंक आज से 6 साल पहले अराउंड, जिस टाइम पे 2017 में आई ऑल्सो स्टार्टेड विथ माई ट्विटर अकाउंट, उस टाइम पे कंपैरेबल थे इसके द फ्लैट अर्थर, जिसको द फ्लैट अर्थर विथ सिंगल आर मिला नहीं था तो डबल आर रख लिया बिकॉज इट वॉज कूल इनफ। आई वॉज ऑल्सो हंटिंग फॉर नेम्स, और फ्लैट आर्थर अल्टीमेटली वो स्टिक हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ ट्राई किया था। इट इज़ फ्लैट, इट्स फ्लैट, इट इज़ फ्लैट एज फक बट फ्लैट एज फक वॉज टेकन। What was still available was flat as fuck. That's useless information. Anyways, तो 6 साल पहले सेम आई थिंक कि उसके भी बिलो 10K सब्सक्राइबर्स थे या 5K सब्सक्राइबर्स थे, और उस टाइम पे मैं भी स्टार्ट कर रहा था तो 1000 बन गया था सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स जो भी होता है ट्विटर पे, एक्स पे, माय गॉड जो भी है। लेकिन आज देखो, ये डिलीजेंटली, आई थिंक एक टाइम पे ये अपना PhD साइंटिस्ट ऐसा भी कुछ लगा के रखता था, लेकिन अभी चेंज कर दिया है कॉन्स्पिरेसी रियलिस्ट शुरू में ही, कि यस यू आर एंटरिंग इनटू अ realm ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, फ्लैट अर्थ इज़ द मदर ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसी थियरीज। देयर वॉज अ टाइम आई यूज्ड टू से these थिंग्स माई सेल्फ, आई डिड नॉट नो बेटर, और क्या बोलूं। सो फीस्ट ऑफ नॉनसेंस की झलकी चाहिए, क्या होता है फीस्ट ऑफ नॉनसेंस? देखो कि ये अपना नाम रखा है द फ्लैट अर्थर, मे बी आर्ग्यूएबली द बिगेस्ट वन, जो कि सिर्फ फ्लैट अर्थ की वजह से ही चल रहा है। और क्यों पहुंचा यहाँ तक? क्योंकि लोगों को यही चाहिए,
feast of nonsense. This is how the controlled opposition has been designed. कि आप लोग कभी पहुंचो ही नहीं to the real truth. See, pay me if you like my content. वही सेम 2015 से सेम जो दिखाते आ रहे हैं अभी भी वही चल रहा है. और वही इसमें माय गॉड कितने सारे एनालॉजीज हैं. अनदर एनालॉजी, टाइम. विकास दीवान, अनदर फ्लैट अर्थर supposedly. उनके थ्रू किसी का कॉल आया था मुझे. विकास देवान नेवर टेल्स मी बिफोर ही शेयर्स माई नंबर विथ एनीवन, बट कोई एक थे जिनको कि इसरो के बारे में कुछ क्लूज चाहिए थे. तो विकास देवान ने सोचा कि चलो ये फ्लैट अर्थर है, इसका नंबर दे देते हैं. और उनसे कॉन्वर्सेशन में कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ एनालॉजीज मुझे देनी पड़ी, which are worth repeating here at this point. तो सबसे पहले हमें जो चांद के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं उसमें रॉकेट ये कर रहा है, रॉकेट वो कर रहा है, आदित्य L1 का शटर खुल रहा है और बंद हो रहा है, और चंद्रयान 3 का लैंडिंग वीडियो फेक है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन दिखाया है उन्होंने कि वहाँ पे पहुँच गए. नाउ वी आर एनालाइजिंग दोज वीडियोज़ कि ये वीडियो में अगर कुछ भी ग्लिच मिल गया तो पकड़ लिए इसरो को. फिर तो इसरो एकदम कहीं बच के नहीं जा सकता है. नो, आई ट्राई टू गिव हिम दिस एग्जाम्पल कि मान लो आपको कोई बोल रहा है एक रेनबो कलर्ड एग देकर, इट इज़ रेनबो कलर्ड, राइट, नॉर्मल साइज़ का ही एग है लेकिन रेनबो कलर का है, और वो बोलता है कि दिस इज़ a unicorn egg I am giving you. There is a unicorn in my house. It lays eggs. This is one of them eggs. Now you have to believe in unicorns. आपने क्या किया? अंडा लिया और उसमें चेक किया कि अंडा के ऊपर किसी ने पेंट किया है, पेंट ब्रश से. ये क्लियर हो गया कि ऊपर में किसी ने पेंट करके, रैप करके, जैसे भी आपको एक चिकन एग ही दिया है. इट इज़ ओनली पेंटेड इन रेनबो कलर्स एंड समवन इज़ टेलिंग यू कि इट इज़ यूनिकॉर्न एग. तो आपने चेक किया, कंफर्म किया कि वो चिकन एग है, फिर उसको बोलने जा रहे हो कि नहीं, यू आर लाइंग बिकॉज दिस एग इज़ अ चिकन एग. ना, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है. बट इन द होल प्रोसेस यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड दैट यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट. उसने अंडा दिया, आप चेक करने चले गए कि अंडा दिया जो वो सही दिया, गलत दिया, और जब मिल गया कि यार ये गलत दिया था, तो बहुत खुश होकर उसके पास गए कि देखो यूनिकॉर्न्स नहीं होते. बट दिस होल प्रोसेस वॉज नेवर रिक्वायर्ड. वो बोल रहा है उसके पास यूनिकॉर्न्स है. वो यूनिकॉर्न अंडा देता है, 6 फुट का है या छोटे साइज़ का है या किस कलर का है, ये सब कुछ उसको प्रूव करना है ना, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि यूनिकॉर्न है. सिर्फ अंडे देने से नहीं चलेगा. यूनिकॉर्न क्या होते हैं और कहाँ पे है वो दिखाओ, राइट. सिमिलरली चांद का वीडियो हमें दिखाया जाता है. मैंने उसे बताया,
उन सज्जन को बताया कि अर्थ आई एम सॉरी स्पेस इज़ फेक। पूरा अपना जो हाउ द वैक्यूम ऑफ स्पेस कैन नॉट एग्जिस्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, गैस प्रेशर कैन नॉट एग्जिस्ट नेक्स्ट टू द वैक्यूम ऑफ स्पेस एंड स्पेस इज़ फेक। इसीलिए वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर को लीव करके वो वैक्यूम मीडियम में जा रहे हैं, अगर एक रॉकेट निकल सकता है तो भाई गैस मॉलिक्यूल्स तो उससे बहुत पहले ही निकल गए होते, हैड दैट बीन द केस। सिंस इट इज़ नॉट द केस, हेंस देयर क्लेम फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस। तो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ एक मिसाइल लॉन्चर कि ये लो मिसाइल लॉन्चर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और इससे प्रूफ होता है उनका पूरा का पूरा जो शरेड है, वो आपको जो नार्निया के बारे में बता रहे हैं, वो नार्निया ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद यू डू नॉट नीड टू वरी कि नार्निया में यूनिकॉर्न्स होते हैं और यूनिकॉर्न्स अंडे देते हैं और वो अंडे रंगीन होते हैं, बिकॉज बिकॉज बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गेट इट। आगे बढ़ते हैं, वीडियो ख़त्म भी करना है। आई थिंक हाउ लॉन्ग आर वी इनटू द वीडियो? 37 minutes. No, 1 hour. Yes, that seems more like it. ख़त्म भी करना है वीडियो। चलो 1 घंटे का हो गया, लेट्स कंटिन्यू। कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो करनी ही पड़ेंगी, एटलीस्ट ये वीडियो तो कवर करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई विल लेट नेथन डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग नाउ देन। Stupid people don't come up with that. He may not be a genius, but he's not stupid. Would you get in a ring with Mike Tyson, or would you continue beating up little kids? But it's not about getting into a ring. Well, he's not getting into a ring with anyone here. It's just coming here and having the conversation about reality, about what can and cannot be proven. It's cornering Like the these market that this has been pitched to. Flat Earth has been pitched to conspiratards. So the majority of people who know about Flat Earth that may attend something like Flattoberfest or buy a Flat Earth app, it's shocking. This is going to seem shocking to you all. They're conspiratards! The majority of the people around us are numpties. That's just a fact. Now, that's not our fault, having found out the reality of our world. It's the fault of the way the controlled opposition fed the information into society in the first place. Well, where did they feed the information into society? Via 1,000,001 conspiratard channels. So that, shockingly, conspiratards picked up on it. That's why when I arrived here, you got bloody clone centres and Mandela. Man, what the hell? Where the hell have I arrived? Can't do anything about it. He's just cornering that market. And that market only exists because the controlled opposition is what's created that market. Now, we don't really want that market. I want, and I've said this on like 2 years ago when we started covering videos more heavily, I want the mainstream. When we were talking about the 2 different boats that you could rock, or Nathan rocks the boat, talking about how Jaron doesn't like my claims of scientific proof, or the tiny little boat in the tiny little pond on top of a massive, enormous ocean liner that's got an aircraft carrier on it. That massive boat, that ain't being rocked though, is it? Why? Because we're too busy dealing with the controlled opposition market that's been developed that Dave's profiting from, and concerning ourselves with how he's profiting off the conspiratard market this information's been fed into, and concerning ourselves how we should be putting out better arguments to these conspiratards. They're not our market. Our market is Neil deGrasse Tyson's market. He's not fighting us though, is he? We're too busy fighting Jaron and Dave. Just how it should be. Let them fight amongst themselves. That's how you lead the opposition to do exactly that. And that's what we're tied up in. Where's Neil deGrasse? Why are we concerned ourselves with why Neil deGrasse Tyson isn't coming to this show? No, we're concerned with why Dave isn't coming. Give a crap. So, Arvin's in the chat. Hello, Arvin. और किसी को अगर चैट में जो हैं उनको अगर ज्वाइन करना है, then the link is in the pinned comment.
आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी सवाल पूछ रहे हो अगर इम्पोर्टेंट है तो यू कैन कम लाइव। बट कुछ मुद्दा है, बात कर रहे हैं हम, उसी से रिलेटेड बातें होंगी। एंड मुझे आज का जो मेन मुद्दा है वो कंप्लीट भी करना है। सो अभी जस्ट हमने फीस्ट ऑफ नॉनसेंस के बारे में नेथन ओकली का जो मेन पॉइंट है, एंड बहुत पहले आई विल बी डम इनफ टू इवन गो लुकिंग फॉर दैट वीडियो, बट बहुत पहले नेथन के चैनल पे ही या फिर मे बी क्वांटम इरेजर के बॉलबस्टर्स एपिसोड में आई टॉक अबाउट a wild conspiracy theory within the conspiracy world of flat earth, that कि ये जो डेविड वाइस और जेरन और विटसेट, इवन ग्लोबबस्टर्स, जो लोग हैं ये चाहते नहीं हैं कि अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आ जाएं, लोग श्योर हो जाएं कि अर्थ फ्लैट है, जिस वजह से they keep feeding them feast of nonsense in order to keep them in two minds. It was months ago, Nathan ke channel pe I presented it like that only, that here's a conspiracy theory within flat earth, that these guys are actually feeding the fence sitters. They want people to be on the fence because that's their audience. They are the ones who are going to come back to watch more videos on David Weiss's Flat Earth Clock app. Again, I'm guilty of all these things. There was a time when I downloaded, I paid $3 or $5, don't remember. तो यहाँ पे नेथन ओकली वही बात करता है कि भाई conspiratards, I'm still not able to pronounce it correctly, conspiratards. Like 2 years ago when we started covering videos more heavily, I want the mainstream. I want the mainstream. Same applies to me also. Mainstream videos cover करना मुझे भी start करना पड़ेगा. But for the time being, इतना में भी औकात नहीं है मेरा कि mainstream को even address भी करे. इसीलिए जो लोग सुनते हैं मेरे चैनल को, when they come across flat earthers यूजिंग माई आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो मैंने बताया अपने पिछले 1 साल के मेरे वीडियोस में, और साइंस रिलेटेड फ्लैट अर्थ आर्ग्यूमेंट्स, वट एवर पॉइंट्स आई एम ट्राइंग टू मेक इन दोज लाइव स्ट्रीम्स, ये सब आप समझते हो, वो सब आर्ग्यूमेंट्स लेके आप दूसरे के सामने जाते हो, एंड फिर कहीं पे अटक रहे हो, उससे रिलेटेड सवाल जो है वो आके पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली उस इंसान को भी ला सकते हो जो कि ग्लोब अर्थ की तरफ से बात कर रहा है. सो दोज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस I would love to have in my channel. लेकिन ऐसे ही रैंडमली कोई ग्लोबर उठ के जस्ट कि अरे फ्लैट अर्थर्स तो ऐसा बोलते हैं, प्लीज़ कीप मी आउट ऑफ इट. जहाँ से भी पॉसिबल होगा आई एम कॉन्शियसली गोइंग टू बी आउट ऑफ इट, बी इट अ व्हाट्सएप ग्रुप और एनी अदर काइंड ऑफ एसोसिएशन. एंड अपने यूट्यूब चैनल पे आई डोंट वांट दैट ऑडियंस, यू कैन स्टे अवे. ठीक है. इफ़ यू रियली थिंक कि कोई पॉइंट है मेरे बातों में, जो मैं पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, यू कैन स्टिक अराउंड. दैट्स द काइंड ऑफ कम्युनिटी आई वांट टू बिल्ड. सो 152 मार्क पे अराउंड हो गया. नेक्स्ट पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग. 2 minutes 2 hour mark. बहुत इंटरेस्टिंग है. It was presumably passed off on to me. Yeah, and now you're out of the equation. I'd like to see how that goes. Anyway, I don't care is my point. Why? What's it going to achieve? Yeah, okay, I get beyond the point of where we might financially gain from one of these people. Well, if we're talking about controlled opposition and how detrimental that is. चलो, there are many directions I'm going. बीच बीच में भूल भी जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बात करना है.
एक जो कंटिन्यू कर रहे थे बिफोर नेथन ओकली वंस अगेन, एकदम बहुत सही मोमेंट पे याद आया कि फीस्ट ऑफ नॉनसेंस का एक झलक फिर से देख लो. ये इधर उधर की बातें ना सके, फोटोज़ वीडियोस वगैरह. स्टार्स आर लिविंग. ये जस्ट कल के ही वीडियो में डेविड वाइस के ऊपर पेट खोल खोल के फ्लैट अर्थ डिबेट के पैनल मेंबर्स हंसे जब डेविड वाइस एक आदमी को, जिससे कि वो ग्लोब अर्थ और फ्लैट अर्थ के डिबेट में बैठा हुआ है, वहाँ पे वो बोल रहा है कि द स्टार्स आर लिविंग. ये कॉन्स्पिरिटार्ड लेवल की हम बात कर रहे हैं कि हो गया भाई, मेरा टाइम ख़त्म हो गया. नाउ आई वांट माय वे आउट ऑफ इट. Thank God I found out about Nathan Oakley and flat earth debate and quantum eraser and that whole another level of flat earthers. So यहाँ पे भी I just can't go back to the feast of nonsense. Buildings are free energy providers, Tartaria, सब feast of nonsense. Weather manipulation, wildfires, dew, harp, यही सब सुनने को मिलेगा. फ्लैट अर्थ से क्या लेना देना है पता नहीं, बट दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसीज को फ्लैट अर्थ में आके मिला दो. मेड बाय गाइज, हाँ इम्पॉसिबल है बनाना इतना अच्छा आर्किटेक्चर. वही सेम टर्टेरिया, एटलांटिस, फेक मीट, Bill Gates is trying to kill us. Yay, arrest Bill Gates, arrest Bill Gates. Yeah, Bill Gates with Harvard is trying to chemtrail us. दुनिया भर का feast of nonsense. ये क्या था? नहीं. Sponsored ad. COP28 UAE, जो भी है. Antarctica, land beyond Antarctica. Not knowing what words mean, repeatable experiments, flat earth evidence. The flat earther does not know what science means and what experiments are in the scientific method. In order to know more, attend Science 101 classes. 4 hours worth of science education. नेथन ओकले ने क्या बोला? He is trying to project his channel as an education channel. तो मेरा भी शायद कैटेगरी एजुकेशन में ही रखा था जिस टाइम पे बनाया था वीडियोस. बट अभी लगता है कि ये जो फ्लैट अर्थ पे चर्चा में बहुत सारा कुछ हम बात करते हैं वो स्ट्रिक्टली इन दी एजुकेशनल कैटेगरी नहीं रखा जाएगा, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट मैनी ऑफ माई बिलीव्स. लेकिन अब से we are going to talk about education. पिछले 1.5 साल से it has all been about science education and even schooling flat earthers when they use words like science or scientific or scientifically or experiment when they do not actually know what they're talking about. The feast of nonsense, you get an idea. This is your average flat earther. 9/11 denier, moon landing hoaxer, alien believer, movie setter, mask wearer, Mandela effector, Maui wildfires. What else we got here? Predictive programmingers. And बीच में moon landing, earth, moon landing. सो यही बताना था फीस्ट ऑफ नॉनसेंस की जब हम बात कर रहे हैं. दिस ईयर इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, एपिटोम. Let's go back. And how, when controlled opposition get a hold of a whole group of people who think they're doing the greater good for flat Earth, and they're stacked up in a nice little false dichotomy that leaves the audience in no doubt that there's probably still a sphere, yeah, then they're only aiding the problem. And they're aiding the problem with the benefit of the momentum they've gained and the crowd that they've gained. But as I keep saying,
That isn't our crowd. When they get here and we say, I don't know how far the sun is, they're just going to moan at me. They're not going to accept it, and they're not going to have wider eyes and a gleeful expression on their face because of the possibility of finding out once they've accepted they don't know. They're going to push for answers that they wanted that were given to them by fantasists previously if they came here. धीरव जादव, अटेंशन प्लीज़. अपने सारे सवालों को लेके आप ज्वाइन भी कर सकते हो. धीरज जाधव. यू आर मोस्ट वेलकम. क्या क्या पूछ रहे हो? पॉसिबल हो सकता है दीज स्पेसशिप्स. आर यू इवन पेइंग अटेंशन टू द वीडियो? मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? डजंट सीम लाइक इट. पे अटेंशन. फीस्ट ऑफ नॉनसेंस जो टाइटल ऑफ द वीडियो है, डाला है ना टाइटल में? या वही तो टाइटल है. हैव यू गॉबल्ड अप फ्रॉम द फीस्ट ऑफ नॉनसेंस? फीस्ट ऑफ नॉनसेंस के बारे में बात हो रही है और तुम यहाँ पे फीस्ट ऑफ नॉनसेंस से ही आर्ग्यूमेंट्स उठा के चैट में डाल रहे हो. शाबाश लड़के. ज्वाइन करना है? लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट. ज्वाइन एंड spew your horse shit. I'll give you 2 minutes. That's all you get. I'm not going to suddenly change that type of person from being that type of person. Wild, speculative conspiracy theorists. The reason we are tarred with the brush of conspiracy is because the way that the group has been built up is off the back of conspiracy. That's why they all talk about 9/11 and chemtrails and vaccines and all sorts of other conspiratorial subjects. Some of them make it mainstream, some of them don't. But that is the foundation of your average flat earth belief. Or average flat earther and his flat earth belief or her belief. Not foundational in measurements, proof, science. That's not your average flat earther. We are so far outside of the circle. It's untrue. So to say, you should be doing a better job in that circle for that circle we're not part of and would never want us to be, because we'll never give them what they want. So somehow we need to divorce ourselves from it. Now, Bev has perhaps tried to do that. Sir, यही पॉइंट था. We need to divorce ourselves. जब नेथन बोल रहा है कि we are so far ahead of the circle, I feel so good that I am one of the panel members. I can also count myself as one of these who are actually way ahead of the circle. So far ahead that people even don't understand. इंडिया में लोगों को समझ भी नहीं आता है. अरे नेथन ओकली वही जो गाली देता है अपने चैनल पे, गाली देता है. दिस गाय हैज़, नेथन ओकली हैज़ टेकन दिस क्रिटिसिज्म ऑल्सो फ्रॉम 10th मैन. 10th मैन बोलता है कि भाई तुम्हारे वीडियोस को शेयर करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कि देखो हम लोग फ्लैट अर्थ पे डिबेट कर रहे हैं, और फिर तुम वहाँ पे अपने सॉल्टी बॉल्स लेके आ जाते हो अपना टी बैग करते हो ग्लोबर्स को. सो दैट हैज़ चेंज्ड फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स. आजकल गाली गलौच नहीं होती है ज़्यादा. जब भी कोई बैड वर्ड यूज़ होता भी है, देर आर ऑलवेज पीपल क्वेश्चनिंग, नो स्वेरिंग. राइट. तो मुद्दे पे आओ. पॉइंट जो वो जब गाली देता था तब भी सही बोलता था. मे भी उस टाइम पे तरीका पसंद नहीं था बहुत सारे लोगों को. मुझे तो, मैं फ़ैन हूँ नेथन ओकली का जब वो ग्लोब अर्थर्स पे बरसता है, just for entertainment value. But I just love him for his English flair. I'm so glad that he is on our side. Shout out to Nathan Oakley 1980. This with different motivations,
And in the same way as in the pre-show, it's like, you want to call me a Christian? Yeah, all right, if you want to call me a Christian. Anthony had a similar attitude yesterday when he was asked about by a friend if he's a flat earther. He's like, oh, if you want to call me a flat earther, call me what you like. I'm a realist. There's no proof for a sphere. It's all bunk. We have a flat earth with it. But you know what I'm getting at? Call me what you like, I don't care. But these people want to be flat earthers, and flat earth's about, have you heard about 9/11? Where did you stand on 9/11? Not really. I can't stand with that. होता ही है ये, ऑलवेज हैपन्स. बात करो फ्लैट अर्थ के बारे में और सबसे पहले बातें आती हैं इधर उधर की. कांट रियली ब्लेम. चलो, आई विल नॉट रिपीट मेनी ऑफ द थिंग्स जो कि अभी वीडियो में आगे आने वाला है, बट लेट्स कट टू द चेस. 2:30 mark. Yeah, I come back with my I'm a flat earth knower. I know. Really, Heard about 9/11? Where did you अच्छा वही, लाइक आई सेड, ब्रायन फिर से रिपीट करेगा. यू आर नॉट अ फ्लैट अर्थ नोवर, यू आर जस्ट अ फ्लैट अर्थ बिलीवर. stand on 9/11? Not really. I can't stand with that. I'm a flat earth knower. I know the best description of the earth is flat. I know that's a description that nobody can say is wrong or show to be wrong. I know. Yeah, but that was an interesting take that Nathan had that I hadn't thought about. That is obvious, right? With the conspiratards, that we're separated, right? So we're so far beyond that. So I like your take on that. Very well articulated. What Nathan's after doing is he's after hijacking my point about belief, and he's turned it into his own little argument, and now he's going to go forward and get all the kudos. So you get it. अब आगे बढ़ते हैं. 2 hour 30 minutes mark. इससे पहले पॉइंट क्या था? पॉइंट वही था, नेथन ने बहुत अच्छे से रखा इसी बात को. बहुत सारे पैनल मेंबर्स बहुत पहले से नेथन को यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे. Conversation from happening. You're not allowing them to have the conversation. Would you guys mind if I bring the conversation back to the point of the sun, the distance to the sun? I have a few other questions. Once you're open-minded. Feel free. So even at that time, तो पिछला वाला वीडियो जिसमें फीस्ट ऑफ नॉनसेंस थंबनेल में था, उस वाले वीडियो का कनेक्शन है यहाँ से, इसीलिए आई एम ऑल्सो गोइंग टू गो अलॉन्ग विद दिस पार्ट. लेकिन यहाँ पे इट गोज़ बैक टू क्वेश्चनिंग द सन वाला पार्ट. द कॉन्वर्सेशन लीड्स टू समवेयर रियली गुड, वेयर आई वॉज एबल टू आस्क द क्वेश्चन कि भाई सही है कि गलत है. वो लोग अपना जर्नी में अगर ये सब चीज़ें अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो करने दो उनको. मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, क्योंकि मैं वही रास्ते से आगे बढ़ चुका हूँ अभी. बट देन मेरे को खुद भी लगता है कभी कभी कि भाई आई कुड हैव सेव्ड माई सेल्फ सो मच टाइम. मंडेला इफेक्ट और 50 और चीज़ों में ईथर पीतर अगर नहीं घुसे होते कोई ज़रूरत ही नहीं था. लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड बिकॉज घुसे थे, इसीलिए आज के डेट में समझ में आता है दूसरे भी जो घुस रहे हैं उनकी फीलिंग्स. noticed that John Kiwi was trying to say something to my example, but he wasn't able to, and he never got the chance again. He must have forgotten by now. At any rate, so the guy who was claiming not actual distance or size, but only relative, based on that hotspot effect or the crepuscular rays. So basically he was saying that we can for sure say that
the source of light is smaller than the surface on which the light is falling. Right? So that was his main argument. And he also put it, he also put it in the form of the modus tollens. And there is a big hole in the premise because he put it in the form of if the sun is far away. He did not actually put a number to it. He just said if the sun is far away, then we should be seeing uniform distribution of light all across the surface or the horizon when you see crepuscular rays at the horizon. And even if we are to ignore this big hole in his premise that he did not put a number to it, and let's just pretend that he is talking from the side of globe earthers, just like we have the black swan argument. He's trying to put another argument that if the sun is 93 million miles away, then we are going to have a uniform distribution of light all across the horizon, the same point. So if we put it in this structure, is there still something that can be pointed out being wrong with this argument? Yes. You can say to them, it's faulty logic, it's fearing the consequent, yeah? And more importantly, if I'm a baller, I'd say no. Because the reason, if we have an atmosphere that lenses the strong light from the sun, so as it comes down, then we'll get a hot spot in certain parts of the Earth when it's a ball because of the lensing of the atmosphere. That's got as much support and validity as, well, if we get a hot spot, sun's close to local. There's nothing there. What, the behaviour of this thing that doesn't even have a position, you're making positive statements about how you'll see its reflection as to what that means with regards to its locality and physicality. No, I can make just as much shit up for a ball and it'd be just as valid. Adam just made the point. जो हम पूछे इतना स्ट्रगल करके ऐसा लगता है कि आई एम स्ट्रगलिंग टू इवन string sentences together, or and then comes someone like Adam, so eloquent, and puts the point perfectly using such beautiful words, beautiful arrangement of words. Very, very nice. I love you, Adam. You're so eloquent. So, ये पार्ट हो गया. एडम ने अपना पॉइंट भी रख दिया कि भाई अगर सनस्पॉट वगैरह ये आर्ग्यूमेंट बना भी रहे हो तुम कि सनस्पॉट के वजह से हम बोल सकते हैं कि अर्थ इज़ स्मॉल एंड लोकल, देन अगेन यू आर ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स. ग्लोब अर्थर लाएगा अपना रिफ्रैक्शन लेके एटमॉस्फेयर पे कि ऐसे सन जब घूम के मिलियंस ऑफ माइल्स अवे से पैरेलल रेज आता है तो एटमॉस्फेयर लेंस कर देता है और हॉटस्पॉट बन जाता है. अब ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा सपोर्टिंग एविडेंस, कंसेंसस, सारा जो फैलेसीज आप सोच सकते हो वो किन के पास है? उनके पास है. देन दे आर गोइंग टू बीट यू एट दिस गेम जहाँ पे बोथ ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉनसेंस. नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मेरे नोट्स में मार्क किया हुआ है 245. हाँ, यहीं पे. यहाँ से तो ऑलमोस्ट पूरा ही सुनना चाहिए, 9-10 मिनट. लेट मी सी. Tween frame. That's how it came across on a pause. You're like, okay, there's a few screenshots that I found out there where they paused it, took it, because the plot character did. Is they remembered it because the plot. तो यहाँ पे नेथन ओकली अपना मंडेला इफ़ेक्ट का एग्जांपल दे रहा है कि बहुत सारे फ्लैट अर्थर्स जो मंडेला इफ़ेक्ट में भी बिलीव करते हैं. इंडिया के फ्लैट अर्थर्स में ये एटलीस्ट एक चीज़ नहीं सुना है, ट्रांसजेंडर और बहुत सारी चीज़ें बाकी के जो हैं हार्प और ड्यू और ये वो तो सुनने में आता ही है. लेकिन आई थिंक कि मंडेला इफ़ेक्ट उतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो भी मंडेला इफ़ेक्ट चलता है वो कलेक्टिव मेमोरी पे बेस्ड है
और वो तो इंडिया के लोग हॉलीवुड के मूवीज़, हॉलीवुड के एड्स, उनके सेलिब्रिटीज़, उनके स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, उनके ब्रांड नेम्स, ये सब तो जानते ही नहीं है। तो छोटा मोटा ही कुछ रिलेट कर पाएंगे, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सक्यूज मी, एक टाइम था व्हेन आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इंडियन मंडेला इफेक्ट्स. गॉन वर दोज डेज, गॉन आर दोज डेज. 2018 में यही सब फालतू की चीज़ें कर रहा था. तो यहाँ पे नेथन ओकली एग्जांपल देता है कि एक मंडेला इफेक्ट तो मेरे को अपने सामने दिखता है, C3PO का पैर. जिनको नहीं पता है मंडेला इफेक्ट के बारे में, वो उनको लग रहा होगा कि ये अचानक से क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें के बारे में बात हो रही है. बट नहीं, यहाँ पे नेथन ओकली बात कर रहा था, मैं उसको रोक देता हूँ अपना पॉइंट बोलने के लिए, और वहाँ से मेन अच्छा वाला पार्ट स्टार्ट होता है. देर वॉज सम पार्ट विच आई ऑल्सो नीडेड टू कवर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बस थोड़ा सा प्ले करके मुझे ख़त्म कर दे. नहीं, थोड़ा और लंबा चलेगा, इम्पॉर्टेंट है. Plot character did have braces or metal teeth is a major plot point. Oh no, you are going to be covered by Brian Stavely and how flat earthers deny the Mandela effect. But I just wanted to say that don't be so harsh on the conspiracy tards, Nathan, because I used to be one. Maybe Arvin is one even. So so I wanted to clarify. I may have said that I used to be all of those things, but it's actually like I also gobbled up many of the stuffs from the Feast of Nonsense, and I did not really believe or knew those things to be true, but they were interesting to look at even after you became a flat earther. So I may have spent a couple of years after becoming a flat earther into looking those stuff. Now, am I wrong now if people who are becoming flat earthers today are also looking into the same stuff? Because I also did the same. Now I'm pointing out that this is nonsense. Why are you doing this? Am I right in doing that? Because I was also there at some point. I know that I can teach them what mistakes not to commit, but then you can also leave everyone to have their own path in that sense. Depends how you want to look at it, right? There's an old myth that lemmings will walk their way off cliffs, right? But notwithstanding that that's not true, it's just a Disney movie. You're talking about the lemmings at the bottom of the cliff that have already survived, that you're trying to offer guidance to. They're only around you in the same way that, without being disrespectful to you, you're saying that you found your way to this subject through the means and roads that were offered to you through conspiracy. Therefore, well, look, I found the light after coming in as a conspiratard, and therefore, isn't it reasonable that I should, or you're asking, is it reasonable that I then critique people knowing better? Well, maybe not. I'm saying we should turn our backs on them, because those people are on a path that they're already walking, and they've found their way on that path because the path has been paved with the Feast of Nonsense. So we need to find a different inroad to us. My entire journey has been in opposition to conspiratard nonsense from day one. From literally day one, I've got here and gone, I'm surrounded by people who believe in stupid stuff. Let's point out to them how stupid their stuff is. You're like, that's intentional. Rather than getting here and going, let's really get down to the brass tacks of how Earth's measured flat. You know, don't think that. You either think, wow, isn't it cool that there could be clone centres? Or you go, you're talking about flat Earth and talking about clone centres. That's objectionable. Again, all very useful to the person that wants you to knuckle down and fight amongst yourselves. If the realm is conspiratorial by its inroads. Now, I don't know how to address that. I don't know how to repave inroads towards me when the paths that are coming in are not only coming in with hordes and hordes of conspiratards, they're getting to the gate and being poisoned against me anyway by people like Jaren. So it's like, well, what do you do in those circumstances? How do you change the inroads? How do you change the path of the people that are coming to you? Well, detaching yourself in all ways and forms possible from conspiratorial subjects. That's the only thing I can think of to do.
Well, Nathan, you have to see it this way. You have to wash your hands of them, because if you look at our opposing side, right, we know who they are, our opposition. Now, obviously, we have an opposition. And when I say opposition, I'm including not just the borders, but at this stage, our opposition are all conspiracy nuts. Feast of nonsense. That's our true enemy. Conspiracy nuts. It's difficult to say this, but शो में अगर बोल सकते हैं तो अपने चैनल पे बोलना तो फिर भी छोटा बात है कि yes, I used to be one. A conspiracy nut. That's how I found my way to flat earth. But flat earth is not a conspiracy theory. Enough said. लास्ट में नेथन ओकली का एकदम लास्ट पार्ट में अच्छा समरी आता है, एंड विद दैट वी विल एंड आवर रिव्यू ऑफ दिस वीडियो. But every time his name was brought up for years, the first thing that comes out of the bowler's mouth is that he was a liar. You know, so what happens when David Weiss's name is brought up? Someone who is nowhere near the credibility of Rowbotham, let's just say. In the general public, what's he going to be? He's going to be a conspiracy nut, isn't he? So you're either one or the other. That's what he is. That's Dave's shtick prior to Flat Earth. All he covered, 9/11, conspiracies, things of that nature. That's what he is. Yes, exactly. That's what he was, and he still is. Yeah, so he needs Flat Earth to not be Earth's measured flat. He needs it to be a conspiracy. Because it's far sexier as a conspiracy, easier to sell as a conspiracy than it is to just prove. Now you hit the nail on the head. Not only with them, but the others, correct? I think so. The others? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? The others मतलब पूरा का पूरा rest of the gang, जिनका कि मैंने अभी नाम लिया था. फिर से काउंट करें. डेविड वाइस, एरिक दुबे का वैसे बॉल बस्टर्स ये फ्लैट अर्थ डिबेट के साथ बहुत ज़्यादा पंगा नहीं है, बट एरिक दुबे के साथ मेरा पर्सनल पंगा है. और वो भी सेम कैटेगरी में गिरता है. तो ही इंक्लूडेड डेविड वाइस, जेरन और विटसेट ने तो अभी डायरेक्टली पंगा ले लिया है. और बेसिकली मोस्टली इंडिया में भी जो मैं जानता हूँ रिगर्जिटेट करते हैं मीम्स एंड लिंक्स एंड वीडियोस एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स, वो घूम फिर के सोर्स कहीं ना कहीं यहीं से आता है मोस्टली. चाणक्य तिवारी धन्य हो गए थे जो डेविड वाइस ने उनके चैनल पे आके बात करी. मुझे नहीं करना है डेविड वाइस से बात, और अगर करना है तो क्लैरिटी के लिए करना है कि भाई कुछ कुछ बातें तुमने बोली है, इस पे अपना फाइनल स्टैंड बता सकते हो तो बताओ. ऑल दीज पीपल, अब आई डोंट नो उनको एक्चुअली अगर मुद्दे पे बात करनी है तो मैं कौन होता हूँ बात करने वाला. फ्लैट अर्थ डिबेट पैनल पे बहुत सारे मेंबर्स हैं. आरविन अभी सुन रहे थे, वो भी बात कर सकता है, ब्रायन भी कर सकता है, क्वांटम इरेजर तो सालों पहले बात करके ख़त्म भी कर चुका है और आजकल ट्रीटमेंट वीडियोस बनाता है. इन सारी चीज़ों से इफ़ यू आर अनफेमिलियर तो मेरा चैनल भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा आपको. तो फॉलो करो,
नेथन ओकली को, उसके पॉइंट समझो, क्या बात हो रही है समझो, और फीस्ट ऑफ नॉनसेंस से जितना हो सके बचो. In order to end today's live stream, I'm going to go back to one of Nathan Oakley's video, लेकिन वो प्ले करने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आज का ही लाइव था. और आज पता नहीं कहाँ से अचानक से नेथन ओकली ने डिसाइड किया कि वो एक रैंडम कैटेगराइजेशन करेगा ऑफ पीपल. बहुत रेलेवेंट था आज के मेरे वीडियो से, जो पहले से प्लान था कि आज मेरे को लाइव जाना है, तो उससे बहुत ही रेलेवेंट था. लेट्स हियर इट आउट. But I mean, gas still has weight. Liquid. Past John's point, and if you're going to argue, regardless of if you're inferring that it's a buy now, flat earthers and Ethereum and people in our camp, whatever. Everyone's clear what we're talking about. Needs to be in respect to 90 degrees to the horizontally. And pull in the Bribe. Let's compare it to something else. If you're going to compare the Atmo at various different heights, as John pointed out, I don't know why everyone's walking past your points over the last month. Chalo, it's coming. It's around this point in the video only. Thoda sa. Yeah, but I mean, ballers technically fix that very easily. It's just like, yeah, you just. So, if you happen to be a moderator of mine and you are a member, then I've delayed this so it's tomorrow. I think the show comes out on my second channel if you're not a member. But if you are and you're a mod, please go and watch yesterday's pre-show. So what are we on today? Which is steps of what Nathan Oakley channel do. Oh, thank you, including Arwin. So you can also listen to that. I believe to be the right way and the wrong way to moderate. I wanted to draw as a housekeeping aspect, and I can only really do it live to make it relevant to the moment, so that people know that that's been done. So that's that, and that's going to be housekeeping for today. So only one question, gravity is going to be it, unfortunately. But what I am going to do, which is going to be a bit of fun, hopefully. Yes, finally we have come to that part. It is going to be a bit of fun, and with this, I'm also going to end my live stream. ठीक है, आगे से भी इट विल बी एन ओपन पैनल, जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं. बट अभी नेथन ओकली का रेलेवेंट वाला पार्ट जो प्ले करना था वो हो जाएगा उसके लाइव स्ट्रीम से. आई एम गोइंग टू एंड द स्ट्रीम. Later. And then we'll get on to Tinfoil Hatman, is a bit of categorization. So we're going to we're going to ascribe some descriptions of people and their behaviors to groups. So we're going to be not necessarily stereotyping, but giving a description of sort of categories of people that are in this field that we deal with that is fondly called Flat Earth. Now, I'm going to start with one that's easy for us to all understand, which is a globe believer. So if I say globe believer to you, open brackets, normie, most people know what I'm talking about. They're not talking about somebody who comes and fights with us. They're just talking about your sister, your brother, your father, your cousin, the guy who isn't anywhere near this subject, that just knows because he's been through the average Western world school system that he's on a sphere because he knows it. That's your average globe believer. Category 1. Now, this also, I've put this into a specific order, so there is an intent to the order that I'm going to give you here, because it's the order that you'll find information on YouTube. That is to say that for that guy, if you are to type into a YouTube search something with a question about, I don't know, how Jupiter works, the first search result, the priority, would be given to a general normie. That is to say, globe believer might represent a person that's watching, but in this context, the reason it's at number 1 is because it's also what you'd be fed first on YouTube. So you wouldn't get anything even resembling a flat Earth idea when you're just doing a search about something in the sky for the sake of argument. You'll just find
the 20 million subscribed guy that's talking about how you general school taught rhetoric with a frame that is heliocentric around it. And he's not doing it because he's trying to punt heliocentrism as his belief. It's just what he knows to be the truth, and therefore that's what you'll find first on the searches. Okay, so what comes up next if you're more specific in your search and you want to maybe find your way to this subject or whatever means or whatever search you put in? Well, the next thing you find on the list is an anti-flat earther. Now, again, if you're a regular on the show or watching the show regularly, you'll know precisely what I mean when I go to number 2 on the list, which is anti-flat earther. That's what you fed next on the list. Now, if I give you a few names so that you're familiar with who we're talking about your Dave McKeegans, your Simon Dans, your Professor Dave Explains. Those are your anti-flat earthers, okay? So that's what you'll be fed next, were you to, I don't know, search for flat earth. That's what you get. Basically, a fundy globe zealot. That's what that category is. So category 2, anti-flat earther, basically a globe zealot, a religious fundamentalist who has a globe belief that opposes flat earth. So that's that category. Number 3 on the list. Now this is going to be a slight deviation from what you might expect and a new category. An anti-glober. Now bear with me, because this category is actually flurf. This is old school flat earther is what I'm recategorizing as actually anti-glober. Now, I'm sorry to do this to you, Dave Weiss, but you're the reason for this. I don't know if it's going to get your namesake, but anti-glober is as a direct consequence of the processing in my mind as a result of Dave's performance when we critiqued him yesterday. So again, check out yesterday's show if you want to know what I'm talking about. But what Dave does is go through endless cycling of heliocentric claims followed by his professing that it's wrong or stupid or whatever, yeah? But it's always globe rhetoric and how globe doesn't work. Well, that's an anti-glober. What we used to call flat earth, old school flat earth, right? Or formerly, or currently, known as flurfers, right? Well, your average typical flat earther, when we go, oh, I don't even want to be called a flat earther at the moment because of what we're experiencing. It's normally someone on our own side regurgitating their advanced knowledge of heliocentrism and how it doesn't work. Well, that's an anti-glober, isn't it? They're not proving Earth's flat when they go through how the globe doesn't have spin or the globe doesn't have Earth curve. That's anti-globe. Well, Nathan, they'd like to be called globe skeptics. They have a name for it. Yeah. I mean, that's a perfect argument. Brilliant. Exactly. So they may have in the past, when they were too shy or not confident enough to just say, yeah, Earth is flat, would have said, oh, no, I'm a globe skeptic. And they go, no, you're not. You're a flat earther. We've got a category for you. No. I'm just skeptical about the globe. No, ask John Le Bon. The amount of times he's been called a flat earther. He's like, I'm not a flat earther. Like, well, you go on about how Earth isn't got any curvature or Earth hasn't got this, that, and the other as a sphere with your example of how it isn't. Oh, well, that doesn't make me a flat earther. Yeah, it does. That's what that category means. Like I say, category 3, old school flurf. The old guard, the anti-glober. Moving on. Category 4. I like it. Right. And again, that's what you get on the list. So, you know, if you're not searching for just straight up rhetoric from NASA or straight up rhetoric about what you've been taught in school, category 1, globe believer, you then go into you get the Simon Dan. If you're going a bit further down the list, tier 2, you might have a vague inquiry about flat Earth. You're going to find your way to Simon Dan and Dave McKeegan and Professor Dave Explains and, you know, all of those sorts of channels that come up high on the list, second on the list in my categorization. Third on the list, anti-glober, you might find your way to Dave Weiss or Jaron, where they're telling you how the globe don't work. Yeah? Now, yesterday I tried to give an example where if you tell a kid not to do something, but give them this specific example of what they shouldn't do, it just puts the idea in their mind of what they shouldn't do. Look, Jimmy, don't put that fork into the electrical socket. He was just holding a fork. You know, now he's got the idea of putting it in the electrical socket. Well, anti-globers, category 3, are just that. They're giving you the notions of how the globe functions, but then now it's wrong or stupid. Like, that's not helpful for a flat earther, and they shouldn't really be calling themselves that. Skeptic for the globe, maybe. Anyway, category 4 is a flat earth believer. This might fall into sort of
outside and inside of YouTube and videographers and people who watch as well that both fall into this category. They're normally conspiracy nutters, basically. You might also categorize Etherians and Tartarians into this category too. So they're people who've come to the subject because they're interested in conspiracy. They're interested in 9/11 truth. They're interested in Tartaria or Ether. And they don't actually know Earth is flat. They're a flat Earth believer. You know, they're the mass of what we call flat earthers. Yeah. So they're not really well versed in globe rhetoric. You know, they're not category 3. They're not like Dave Weiss. They just think that maybe we've got free energy because they've heard that from Dave Weiss, and also think that there's been mud floods and that, you know, 9/11 was an inside job, or whatever it is that they believe in, that they've read a lot about and had lots of various different information about conspiracy, including flat Earth with all the garbage and feast of nonsense. So that's what you get. Free energy. You got it. So that's what I'm putting in category 4, a flat Earth believer. You're getting closer to category 5, which is us. Now, this is tentative, but we've got people in our arena that are giving themselves titles. And I was chatting with Paula the other night, actually, and she was describing how the church separated and drawing a direct comparison to how that fragmentation is what we are experiencing in Flat Earth now with different denominations. You know, I don't have to list them all for everyone to appreciate what I'm saying. But what I personally see me as, in terms of a comparison to the old school flirfs in category 3, is a new flat earther. That's us. Excuse me. So a new flat earther, as in someone that actually appreciates that Earth is measured flat. They come from their argumentation standpoint from the position of Earth being measured flat and how it's useful because it's flat, or how it's used flat. Well, that's us, new flat earther. That is the only word I could come up with that distinguishes ourselves from the old school guard, the old flirfs, the old FE, what I've now recategorized as an anti-glober. Well, I categorize it flat Earth generation 2, because it is like it's an evolution. It's just we further developed. We further developed the very roots. Basically, the old guard didn't do that. What about flat Earth Noah? Cool. The year of a measured flat Earth, a utilized flat Earth, a referenced flat Earth. In fact, twist it into how they've used a flat Earth in the first instance, with that not being the case. With what I call a new flat earther saying, yeah, it's measured flat. Oh, what's that? I need to get into a wrangle-dangle with you about how you say your belief in your globe works. I've no interest. Or I've got to learn how it works. I've got to be really good at debunking your positive affirmation that you've not proven. I don't need to. As a flat earther, I prove Earth's flat. Now, we, if push came to shove, could be on a debate, as we do, basically all day, every day, and still be able to take apart a base level, any heliocentric claim, and in fact twist it into how they've used a flat Earth in the first instance. That's where we're at. But I don't want anybody coming to this subject moving forward into 2024 to not know the moment they get here that it's proven flat, measured flat, used flat, built on flat, navigated flat, obviously and observably flat. If they don't know that from the moment they get here, then we're doing something wrong. By the way, Nathan. On that note, खत्म करते हैं. नेथन ओकली, जो लास्ट में बात बोला, आई स्टैंड बाय हिम. और चलो 2024 में मेरे तरफ से भी यही कोशिश रहेगा अपने चैनल पे. न्यू फ्लैट अर्थर, और विच एवर वे यू वांट टू पुट इट, फ्लैट अर्थ न्यू जेन और जेन 2.0. लेकिन अब बस इतना बोलना काफ़ी नहीं है कि इट्स नॉट अ ग्लोब और योर ग्लोब डजंट वर्क. फ्लैट अर्थ इज़ रियलिटी, इट इज़ मेजर्ड फ्लैट, इट इज़ यूज्ड फ्लैट. यार ये वाला पार्ट फिर से एक बार ही प्ले करना बनता है और उसी के साथ एंड करेंगे. Debunking
your positive affirmation that you've not proven? I don't need to. As a flat earther, I prove Earth's flat. Now, we, if push came to shove, could be on a debate, as we do basically all day, every day, and still be able to take apart a base level any heliocentric claim. And in fact, twist it into how they've used a flat earth in the first instance. That's where we're at. But I don't want anybody coming to this subject moving forward into 2024 to not know the moment they get here that it's proven flat, measured flat, used flat, built on flat, navigated flat, obviously and observably flat. If they don't know that from the moment they get here, then we're doing something wrong.